हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर, कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, अंदर होंगे। हाय फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव में। हाय फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। राधे राधे। बताएं यूट्यूबर जी, कैसे हो? खेतों वाला वीडियो तुम्हारा देखा था आज। बंधा गोभी, धनिया, मिर्चा सब। तुम्हारे खेत थे कि दूसरे खेत दिखा रही थी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। बताएं यूट्यूबर जी। जो खेत दिखाए थे आपके खेत थे, दूसरे खेत है वो बंधा जो लगा था? बताएं दोस्तों, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारे लाइव में।
धनबाद कर लिया है। भाई चाहिए जाते हैं थोड़ा बड़ा हुआ है गाइस, कैसे हो? कल संडे कल संडे में क्या तो ये हो गया तो चले आते हैं तो एग्जाम तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया तुम्ही हो जो ले नहीं गए ये अरे वो आज उठा ले रहे हैं। रोड खुद रहा है। अच्छा सुबह शाम की सर्दी है। मतलब एक भूख लगा देंगे। हाँ कौन सा ऊपर के बाहर? ये दिखा दे ये वाला लगा लो, तुम तो खुद मिस्त्री हो, लगा। अरे आप पे लगा देते थे, लगा दो ऐसे लगा दो। ऐसे लगभग उसको ले डालना पड़ेगा। अरे ये यहाँ पे लगे लगे तो वहाँ, लेकिन यहाँ दिखाई देगा। घर पे लगा लेना, ले जाओ दे दीजिए। आप खुद मकान काम मिस्त्री ये देखो निकल गया है। तो कौन से मिस्त्री काम करते हो आप? इलेक्ट्रीशियन है। मुझे लगता है नहीं यार, नहीं ये मेरे पास हुक तो है लेकिन इसका वो नहीं है ऊपर वाला। कल ले लेना। चलिए कोई बात नहीं। कल सिलाई करेंगे अंकल? किसमें? इसी पैंट में कर देंगे, पैसे लेंगे, हमें काम सब करते रहेंगे। कितने पैसे लेंगे? 20 रुपये कर दीजिए। हमारा काम है करना, जैसे आपका काम हो वैसे हमारा काम ये। कहाँ खुल गई सिलाई? नहीं डबल करानी है, ये हमने रेडीमेड लिया था। थोड़ा मजबूत हो जाएगा ना अंकल।
स्टूल ले लो, स्टूल में बैठ जाओ। वो अपना स्टूल है बगल में। जी हुक तभी टूट गया है रेडीमेड की वजह से। जी। रेडीमेड में हल्के वाले लगाए। हाँ बैठ जाओ, स्टूल ले लो। ये बैठे नहीं, बैठो आराम से यार। अब वो हम कुछ कह ही रहे, वो कुछ कह ही रहा है। हाँ नीरज जी, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप हमारी लाइफ में। बताएं नीरज जी, कैसा मौसम है? आप क्या ठंड पड़ रही कि नहीं पड़ रही? नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप हमारी लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। बताएं सर कैसे हैं? नीरज जी कैसे हो बोलो। हाय गाइस कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। नीचे तो लंबा भी ज़्यादा है यार, सिलाई खुल रही है। जी भैया, लंबाई भी ज़्यादा है नीचे से। हाँ लंबाई ज्यादा भैया, कम कर देंगे? कम कर दीजिए। 30 रुपये और हो जाएंगे फिर यार। जी भैया, 50 रुपये हो जाएंगे फिर आपके। ठीक कर रहे हैं। कर दीजिए भैया। हेलो नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है सब? बढ़िया है, बस बैठे हैं दुकान में। कहाँ हो? दुकान पर हो? हाँ और बताओ, बढ़िया है सब। चाइना लाइनर में क्या हाल चाल है? चल रहा चैनल। चल रहा है? हम्म, सब्सक्राइबर बढ़वा दिया। अच्छा धन्यवाद भाई आपको बहुत बहुत, प्रधान जी। पहचान पाए नहीं? हाँ पहचान गए, प्रधान जी बोल रहे हैं पहचान। हाँ नंबर सेव है। चलो चलो, कल कहाँ रहोगे? कल आपको ले चलना चाह रहे हैं? आप लोग चलना चलना कहते हैं तो बताओ क्या चीज़ है क्या नहीं यार, ऐसे थोड़े आदमी कहीं जाएगा किसी के साथ है। पहले सब बताओ क्या है क्या नहीं है। अरे यार, महाराज चलना। अरे कार्यक्रम है, कार्यक्रम में चलेंगे तभी तो पता चलेगा। ये मतलब कर देंगे। क्या नहीं? नहीं ऐसे बताओ तो ऐसे देखिए भैया, कहो, हर शनिवार कहते चलो यार है। ये बना जाता है। 50 हो जाएंगे। खाने को मिले, अब इसका पैसा फिर नहीं क्या चीज़ है वहाँ क्या है? दीजिए? भाई आप हमारी उतनी बुरा मत मानना भैया, उतनी दोस्ती है नहीं कि आप जहाँ कहो वहाँ हम चल देंगे, हम कहो चल देंगे आप। हाँ वो तो जब काफ़ी गहरी दोस्ती होती तब आदमी कहता है यार वहाँ चलना वहाँ चलना, घूमता है दिन भर आदमी। जब एक अजनबी अजनबी से मिलता है तो पहले काफ़ी थोड़ा गहरी दोस्ती बनती है, समझना बात हमारी। बहुत गहरा पॉइंट बता रहे हैं हम। लेकिन तब कभी फिर कभी ये होता है जैसे कोई अनजान जगह बुलाया जाए तब वहाँ पे दिक्कत होती है। अरे हमारे तो अनजाने जगह है यार। 12 बजे एक कार्यक्रम है, इवेंट है, वहाँ पे 35 कर दीजिए। सैकड़ों लोग आएंगे वहाँ पर। नहीं आएंगे तो वहाँ आने का क्या उद्देश्य है क्या है यहाँ? समाज के प्रति कार्य है, देश के प्रति कार्य जानकारी दी जाएगी, है। इकोनॉमिक लेवल पर जानकारी देना है वहाँ पे। अच्छा उसमें कुछ अधिकारी आएंगे, बाहर के भी आएंगे और 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, इसके तरीके भी दिखाएंगे। और भी समाज में क्या चीजें हैं, क्या चल रहा है, कहाँ हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसमें आप अपने परिवार के साथ बैठ सकते हो, सिंगल बैठ सकते हो, या किसी आप व्यक्ति को साथ में ले जा करके बैठ सकते हो। सारे ऑप्शन तो खुले रखे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा ले चलेंगे अभी यार हमारी थोड़ा स्थिति खराब परिस्थिति समझो। हाँ कहा थोड़ा हमारी परिस्थिति खराब चल रही समय। हाँ इसलिए ये समझ रहे हैं परिस्थितियाँ खराब है, तभी तो मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ। परिस्थितियाँ खराब है और इस खराब परिस्थितियाँ कहाँ से सही हो सकती है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। वो भी इसलिए आपका कोई आपसे पैसा तो दे नहीं रहा है कि नहीं आप हमको हम पैसा देना पड़ेगा आपको एक चीज के लिए। कितने दिन का है? जानकारी मिलेगी तो हमारे रजिस्ट्रेशन का आपको पैसा देगा, पैसा देना पड़ेगा। कितने देर का प्रोग्राम ये? आप कॉस्ट मिलने वाली नहीं आपका समय में घंटा दे रहा है। चलो ठीक है, तैयारी कर लो। कुशवाहा जी आ जाओ, आप दमदारी के साथ में वहीं मिलते हैं, बैठ के बात भी होती है, चाय भी। अभी नहीं, पहले और कुछ दिन बीतने तो हमारी दोस्ती को आप तब खिंचलेंगे। हाँ चलो ठीक है, एक इंतजार करो। हाँ ठीक है कुशवाहा, ठीक नमस्कार।
कितने का तो कह रहे थे, 35 कर दो। हाँ 35। अब 50 तुम्हारे हो जाएंगे यार। अरे ले लीजिए अंकल, वो नहीं ले नहीं, बताना पहले जो जरूर है। काम करेंगे तो पैसे तो भाई देंगे। जैसे पहले आपने कहा था हुक लगा दे 10 रुपये थे, फिर बाद में कहा सिलाई मार। इधर नहीं किया अंकल जी। अभी सब करेंगे, तुम वहीं बैठो। पैंतीस करनी। जी। बहुत लंबा था। हाँ? ये चलता तो हमें ऐसे लपेट के चलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि पानी लगाने जा रहे हो भाई यार। आजकल छोटा हो जाए लेकिन लंबा ना हो। हाँ। अरे जी। अब इसकी इस पैंट की कीमत बढ़ जाएगी ना अंकल? और क्या। नीचे से अंकल की नहीं? वहाँ नीचे से खुलेगी नहीं, नीचे नहीं खुलेगी। जहाँ से लोड पड़ता है वहीं से खुलेगी। अंकल ये पीला वाला बात नहीं तो नहीं दिखाई देखो। बड़ी वैसी मशीन, इम्पोर्टेड मशीन है ये। हाँ बस वैसी ऐसी वैसी मशीन नहीं है। 40,000 देख रहे हो, बता रहे स्पीड कितना चले दिन भर में, पूरा हिसाब चाहिए। शाम से बताती कितने किलोमीटर चली मशीन। बत्ती नहीं आएगी तो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मेरी शर्ट भी लंबी है, बताओ क्या? खरा उसमें कहा 30 रुपये खाई लंबाई है कि ढीली भी है। हैं? हाँ शर्ट भी लंबी है, पैंट भी लंबा था। ढीले तो नहीं सीने से? नहीं ढीला नहीं। कितने बच्चे हैं? 20 और देना। बाकी सब है, ये केवल लंबाई ज्यादा। 20 और देना, 70 तो उसको भी कर एक क्वार्टर वर्कर व्यवस्था हमारे। हाँ तो ये करने के लिए बैठे जाओ तो कुछ करा। तो अंकल जी लाएंगे एक क्वार्टर। करें उसको भी। अब शर्ट बनी रहे, उसको तो अंदर कर लेते हैं। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा है। ₹100-200 बच्चे के लिए ले। क्या बच्चे हैं?
बच्चे बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनके लिए सोचना पड़ता है अंकल। ये देखिए ये कहीं खड़ी तो नहीं है, ये इनको एक दिख रही है। इसके आगे अंकल ये वाली जेब देख लीजिए जरा। यहाँ देखे छोड़ दो। नहीं अगर ना फटी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली है, ये वाली उधर ध्यान डालते हैं ऊपर के लिए। बत्ती तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे दे रहे हैं सब दूर कर तुम्हारे। देखो कैसे भागती मशीन। ये तो पैसा गिर जाते हैं अंकल जी, समस्या ये होती है ना। दोनों से लिया नहीं गिरेंगे कुछ। पहली बात तो कपड़े लिए ना करो भगा। हमने सोचा कौन आ गया। ले। हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। हाँ कहाँ? वो वहाँ साइज लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे दे देगा? नहीं वो होते हैं ना साइज है। फेरी वाला तो उसे डाल 5 रुपये डालेगा। हाँ वहाँ गए तो कहने लगा लेके आओ तब दाँत। ये देखो तुम्हारे मलक देखो, हमारी मलक है देखो दाँते। इसकी तो ही ना ऐसे थोड़ी इसकी होता है। हाँ सबके अलग अलग होते नंबर होते हैं, 12 नंबर 14 नंबर 16 नंबर। यही है चेन। ये नहीं तो है। हाँ वो जाके इसमें नहीं है, ये तो सही है। हमारे पास वो दूसरी वाली है, उसके दूसरी, सब में अलग अलग होता सिस्टम। जब छेद मिले तब काम हो।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, अब पहली बार दिल की बात। अभिषेक के पास खुदरा खुदरा अस्पताल है कौन गेट का खुदरा हाँ है अभिषेक क्या नाम है वो गार्डनिया के MS अकेडमी के पहले हाँ गार्डन के इधर हाँ हाँ ये जैसे चले जाए सीधे हाँ ये भी खुदाई होती रही, उधर पानी वाली भी खुदाई हो रही है। ऑक्सफोर्ड को उधर सब खुदाई पड़ी, पानी वाली है। तो पानी कम हो जाएगा ये जब रोड टूट जाएगा हाँ, कुछ कम हो जाएगा। अपने आप कम हो जाएगा। मैं अभी वार्निंग दे देंगे उसको खाली करवा, हाँ। सबसे खाली करवा रहे हैं। गार्डनिया के आगे एक टैंक बना था वो खाली हो गया हाँ। वो पहले बता देंगे, तभी तो आज चालू हुआ। अरे कौन सा गेस्ट हाउस है जेपी कल जा रहे हैं तो हम्म। घंटा लगेगा तो हो सकता है जो पसना तक पहुंच जाए अगर 2 दिन बीच में गैप रहा है वो खाली नहीं थे ना, टैंक बिल्कुल वहीं पे बने हैं और उनको तोड़ के उसे भर दिया, गिट्टी भर देंगे। गिट्टी जो खोदेंगे वो भर जाएगी, गिट्टी भर देंगे। इसका मतलब जितने टैंक रोड बने सब टूट जाएंगे। मकान जब टूट जाते हैं तो टैंक क्या है। हम कैसे अंदर पड़ा रहने दे। तो थोड़ा अवैध भी मान लो पड़े नहीं रहने दो, अगर वो रहने दो ट्रक बैठ गया किसी का तब जिम्मेदार कौन होगा? भाई रोड का मतलब लोडरी भी ट्रक आएगा तो इकट्ठे 10 आ जाए मिलेगा टैंक फिर। और आदमी टैंक में सरिया कितनी डरवाता है जानते ही है। वैसे भी अवैध जगह नहीं करना चाहिए, अपनी सुविधा चाहिए तो अपना उसको खर्चा करो। ये सोचते हैं कर दो पा रहे सफाई। कोई समस्या दूसरों को डिस्टर्ब ना करो अपना कैसे इनका तो जी का इस गली में सब बाहर बने हैं, इनका भी बाहर बना है, इनका भी बाहर बना है। हमने तो अंदर बनवाया है आप सब काम में यही रहता बढ़िया। हम लोग कोई इनका भी बाहर है, उनका भी बाहर है। हमारी गली में भी 2 लोग बाहर बना है। अजी लोग बाहर नहीं अंशु में बाहर है। नहीं नहीं इनका जेल है। आपका बना ना बना होने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे सड़क तो छोड़े सुबह उठ के सीधे वहीं भाई तो आप बनाने बेकार था। हाँ? आपको बनवाने ही बेकार तो सही है, नहरगढ़ टहलिया तो टहलने अब पहले मिले नहीं तो क्या बता अब बेवदार हो बेकार 15-20 हज़ार रुपये बेकार में गया। है? और फिर बच जाए तो फिर 2 किलोमीटर और आगे जाए फिर 2 किलोमीटर और आगे जाए हाँ। बाहर साहब देखा हमने अंदर थे हम तुम न बनवाते तो
बंदा बोला कहाँ है कुछ हाँ अंकित जी कैसे हो? ये चाय यूज करो बड़ी गजब की चाय बनी स्कूल में सबसे जो है वही चला रहे हैं चाय काली नहीं होती है चाय बढ़िया होती है अभी पंडित जी आ गए मुंडा जी खड़े थे वहाँ
कहाँ निकले जा रहे हो यार? हमने राम राम के कहाँ गए थे इधर? ये कैलेंडर लो, नए साल के लगा लेने। हमारा नहीं, दूसरे का है। हाँ अब इसमें आ गया, सुरक्षित आ गया। अपने अपने काम शुरू कराएगा भी नहीं कुछ। अपने में है कहाँ शुरू करें? अच्छा ऐसा है वो सब घर को शिक्षा देकर फंस गया। क्या हो यार ये लकड़ी थोड़ा बांधी ले जाते, हमारे घर पे दे देते लकड़ी। टाइम वाली वही विश्व बांध में 150 रुपये की लकड़ी है यार। 15 रुपये किलो। हाँ वो हमारी गाड़ी में जान पाती यार, हमारी गाड़ी में जान पाती है। लोही नारे से बांध लेना, गिनने में पाए बड़ी थोड़ा सा। हमें तो पहले बांध ले तब फिर उसमें किरेन दबाते, समझो। छोटी वाली चाहे पड़ेगी ना 2-4 हम उसी में डाल लेंगे। देखिए एक आधी उठा लो लंबी वाली। हाँ यही है। हाँ बस अम्मा वही तो आपते हफ्ते आते होते तो काफ़ी दिन तक। आर मशीन तो मंगाई थी यहाँ। हाँ दूर की बात है, यहाँ 15 में। ये कैलेंडर तो ले लो। सामने होटल दिला। ठीक है, टेलर बना दें। हाँ ऐसा नहीं हाँ ऐसा नहीं। कब आओगे? हाँ अरे कितने बजे तुम बढ़ा देंगे? हम 9 साढ़े 9 बजे तक हैं। अगर टाइम लग जाएगा तो फिर कल 5 रुपये तो लाओ। उसने खुद दिया होगा। हाँ नहीं दिया था, डाल लिया हमने।
आज हम लोग बहुत खुश हैं यार, हम लोगों को पार्सल आ गया। पहली बार ऑर्डर किया है, पैसे ले ले फिर जाते हैं लेने। हम चलते हैं अपने दोस्त के पास, उसको लेते हैं फिर चलते हैं। चलो आकाश आओ। नहीं तेरे हाथ में नहीं अच्छा लगेगा। सही लग रही है ना फोटो। आज मजा आएगी रे, कल से अपनी वीडियो आएगी, दिखाते हैं अभी। अबे भाई यार, अबे हम लोग जा रहे खरीद ले, वीडियो बंद करना पड़ेगा। अभी जा रहे हम लोग लेते हैं। कैमरा नहीं यार, अपना मिस्त्री बॉक्स लेते हैं। दूसरा ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर। बहुत खुश है आज हम लोग, 4 दिन हो गए ऑर्डर करे करे। आजा क्या क्यों गया मार क्यों रहा है? चलो अब दिखाते हैं वो कहाँ पे खड़ा है। ऐसे भाई बहुत महंगा है, महंगा। उन्होंने दे दिया है 500 अपना, आप दोनों टमटम भाई चल रहे घर की ओर। अब तुमको घर पे दिखाते हैं क्या हम लोगों ने मंगाया है। चलो चलते हैं घर। अरे मोटे घर पे दिखाएंगे क्या हम लोग लाए हैं, क्या मंगाया है। चलो घर पे जाके दिखाते हैं। इसका साफ मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर वेतन भी बढ़ सकता है। केंद्र सरकार के से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया और